Welcome students. So now again I am here to start a new topic related to basic accounting terms. Clear? So in last video we already discussed about the expenses, expenditure, what are the basic difference between expense and expenditure and what are their types of expenditure. Clear? So now today we have to start a topic which is related to the accounting, and these points or these topic is involved in every type of business. Clear? So we have to discuss firstly about the goods. Clear? So what do you mean by goods? Clear? So goods means a thing which is purchased or produced for the purpose of selling is known as goods. कहने का मतलब है कोई भी चीज अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या खरीद रहे हैं केवल किस पर्पस से, सेल के पर्पस से। अगर हमने सेल के पर्पस से कोई भी चीज खरीदी है या बनाई है वो हमारे लिए बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, गुड्स है। सो यू हैव टू रिमेंबर एनीथिंग व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंड परचेज फॉर द selling purpose are known as goods. Clear? So it's very simple to identify the goods. Let's example. If you have a bike shop, means you have a showroom of bike. You have taken a franchise of Hero. So if you are purchasing a motorbike from the Hero company for the selling, clear? So that bike is treated as a goods. But if you purchase a bike for the business use, means you purchase bike for the use of your manager, for the use of your salesman, is known as a assets, because you are using that bike for the purpose of business, for the use of business. That's why it is treated as a asset. Clear? But if you purchase bike and it sold it to the customer, to your consumer, so that bike is treated as a goods for the business. So it's very easy to identify the goods and assets. Most of the students are confused between assets and goods. Clear? So now it is clear. Anything which is purchased for the selling purpose, which are your regular routine business, are known as goods. Means if you are regularly dealing in bike, regularly you are selling a bike, that's why that bike purchased for sell purpose are known as goods. But if you purchased a bike for the business use, but you used 3 months and after that you sold that, it is not treated as an asset. It is not treated as an asset because you purchased only first priority is for using for the business. You purchased that bike for the use of business, not for the selling purpose. But after some circumstances there is some problem, you can sell that asset. So that's why that sale of asset is not treated as a goods. Clear? So you identify, you can easily bifurcate between goods and assets. Clear? Now come to the next point or next topic or next basic term is purchase. When we use purchase word in accounting, when we use purchase word in accounting, in accounts, if we purchase so many things, we purchase stationery, we purchase building, we purchase land, we purchase so many things. So when we use purchase word in accounting at the time of recording transaction, at the time of journal entry, for which purpose, for which thing you can use purchase word. So purchase word is used only for the purchase of goods. If you
purchase a goods, a thing on which you are dealing in business, on which your business is based, like if you purchase a bike for the selling purpose, so that's why you, for that purchase you use purchase word. Clear? So you no need to write a bike should be purchased. You should write goods purchased, and you have to make in journal entry, you have to write purchase account debit to cash. No need to write bike account debit to cash. Clear? Because if you purchase the goods, so you have to use purchase word for the goods in accounting. And at the time of recording journal entry, at the time of recording in ledger, so you use purchase word. So why you use purchase? If we purchase any goods or thing on which business is dealing. Clear? So you can take an example. So I will explain the example in Hindi. So if you have a shop, clear? If you have a shop of furniture shop, you purchase table, chair, sofa. All these are you purchase for the selling purpose, because your business is furniture. Your business is related to furniture. So any furniture you purchase for the selling purpose is known as goods, and for the goods you have to use purchase word. So what you have to make journal entry? Purchase account debit to cash. Clear? But if you purchase sofa for your office purpose, if you purchase table for your office purpose, so these things are not treated as a goods. These things are treated as an asset. So you have to make journal entry furniture account debit to cash. Then no need to write purchase account debit to cash. Clear? So if you purchase anything for the business purpose, so it will be treated as an asset. So you have to write that furniture or that asset for the name of particular asset. Clear? In accounting. But if you purchase a goods on which you are dealing, so that's why you use for the goods, you have to use purchase word for recording in accounting. Clear? So now come to the next point. What is the next point? The next point is purchase return. So purchase return. So the return word is showing all circumstances related to purchase. Return means when we purchase anything from the supplier, any goods from the supplier, and we return that goods to the supplier due to defect, due to up to mark. So that's why that condition is treated as a purchase return. तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने सप्लायर से कोई भी सामान हम खरीद के ला रहे हैं, जैसे हमारा शोरूम अगर बाइक का ही है, तो हम बाइक खरीद के लाए, तो जरूरी नहीं कि सारी बाइक्स 100% परफेक्ट निकले, किसी में कुछ प्रॉब्लम निकले, किसी की इंजन में प्रॉब्लम है, किसी में स्क्रैच आ रखा है, कोई प्रॉब्लम आ रखी है, तो वो तो डिफेक्टिव गुड्स है ना, तो हम तो अपने कस्टमर को बेचेंगे नहीं, तो क्या हम अपने पास रखेंगे? उसका लॉस हम भी करें? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? उस गुड्स को वापस कर देंगे। तो जब हम कोई भी गुड्स जो हमने सप्लायर से खरीदा है और अगर हम उसे वापस कर देते हैं सप्लायर को जिससे हम खरीद के लाए थे, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। क्लियर? तो उसको हम परचेज रिटर्न के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट? अगर हम कोई एसेट्स खरीद के लाते हैं और वो खराब निकलता है, उसे रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न का वर्ड का यूज नहीं करते। परचेज रिटर्न वर्ड का यूज हम केवल गुड्स के ही लिए करेंगे। आगे बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट नहीं? चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो ये बात हुई परचेज रिटर्न। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल? देखिए, सेल वर्ड भी हम केवल और केवल गुड्स के ही लिए यूज करते हैं। इफ वी आर सेलिंग अ गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज सेल। क्लियर? मींस अगर हम अपना गुड्स जिसको हमने परचेज किया ही था सेलिंग के पर्पस से, उसे हम सेल करते हैं किसी भी अपने कस्टमर को। जिस भी प्रोडक्ट पे हम रेगुलरली डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अगर हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो क्या कहलाता है? सेल। और उसके लिए हम हमेशा सेल वर्ड का यूज करते हैं।
तो देखिए गुड्स के लिए हम परचेज भी यूज कर रहे हैं, गुड्स के लिए हम सेल भी यूज कर रहे हैं। बट जब गुड्स हम खरीद के लाते हैं तो परचेज वर्ड उसके लिए लिखेंगे अकाउंटिंग में या यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उसी गुड्स को अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं तो हम उसके लिए सेल वर्ड का यूज करेंगे। आगे बस अगर बाई द वे हम कोई अपना एसेट्स बेचते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये जो हमारे एसेट्स होते हैं, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं अगर हम कहीं भी, ठीक है, तो उस एसेट्स को सेल करते हैं तो उसके लिए हम कभी भी सेल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हम उस एसेट्स के लिए उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम ही यूज करेंगे। बिल्डिंग सेल किया तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कैश आया किससे? बिल्डिंग के थ्रू, तो बिल्डिंग वर्ड ही वहां यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने गुड्स सेल किया तो हम कहेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, तो हम सेल यूज करें तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। वहां पे हमें गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है, वहां हम सेल वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा सेल। चलिए अब सेल के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सेल रिटर्न? देखिए सेल रिटर्न मींस हमने जो कस्टमर को जो गुड्स सेल किया है, व्हाट गुड्स वी आर सोल्ड, व्हाट वी सोल्ड टू आवर कस्टमर, इफ कस्टमर रिटर्न बैक दैट गुड्स टू द फर्म फॉर द एनी डिफेक्ट, एनी प्रॉब्लम इन द गुड्स, so that is treated as a sales return। मींस अगर किसी कस्टमर को गुड्स में प्रॉब्लम लगती है और वो कस्टमर हमारा गुड्स हमें वापस कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। तो उसको हम सेल रिटर्न वर्ड से ही यूज करते हैं। देखिए सेल रिटर्न को हम कह सकते हैं रिटर्न इन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इन वर्ड के नाम से भी हम सेल्स रिटर्न को लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से जो हमारा परचेज रिटर्न था उसको हम परचेज रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी लिख सकते हैं। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे क्या? गुड्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल एंड सेल रिटर्न। तो ये 5 टॉपिक, 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको सारे समझ में आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड गिव मोटिवेशन टू मी फॉर मेकिंग अ मोर वीडियोस एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू accounting।